Namaskar and a very good morning. Welcome to the audio cast from Kotak Securities. I'm your host and guide Anindya Banerjee. कल यूएस स्टॉक मार्केट्स क्लोज इन द ग्रीन बट आज कोई फॉलो थ्रू एशिया में नहीं है. एशियन एक्विटीज आर डाउन, डॉलर इंडेक्स इज हाई, यूएस 10-year yields आर बाउंस बैक. 438 440 का एक सपोर्ट है दैट हैज हेल्ड एंड 452 के आसपास है द यूएस 10-year. Now euro dollar, GBP dollar both have seen a mild retracement. Now it seems like that ये जो करेंसी पेयर्स है और लेट्स से द डॉलर इंडेक्स पर से, तो वहां पे लॉन्ग लिक्विडेशन के कारण वी सॉ अ पुल बैक इन द डॉलर इंडेक्स. नाउ बिकॉज देयर वाज नो फ्रेश शॉर्टिंग, तो वंस दिस लिक्विडेशन एंडेड वी आर सीइंग अ पुल बैक. सो अगर यही पैटर्न कंटिन्यू रहा, हो सकता है टुडे, टुमारो एंड अर्ली नेक्स्ट वीक वी कुड सी अ रिट्रेसमेंट or a pullback higher in the US dollar index, waiting for the next trigger for the long liquidation to happen again. So अगर वैसा situation है, then it's going to ensure that USDINR doesn't break down below the 83 support. और आज offshore में USDINR is trading around 83.20 के आसपास on the spot, so that range is very much interact with the 83 support. Now the question is, where is the upper cap? पहले ये 83.30 के आसपास होता था. Whether RBI will again draw that hard cap around 83 or will it let it float all the way up to 83.50? That's what we have to see. But 83 is a strong floor. So any pullback towards 83.10 is a buying opportunity. Stop loss रहेगा 83 के नीचे on a closing basis. 83.30, 83.35 is a near term hard resistance. उसके ऊपर 83.50 के आसपास on the spot and futures. क्रॉस करेंसीज में यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर में हो सकता है आज भी एक डाउनवर्ड पुल बैक कंटिन्यू रहे. दिस इज अगेन एज वी सेड, दिस इज अ टिपिकल ऑफ शॉर्ट कवरिंग रैली एंड वी हैड सीन दैट लास्ट वीक व्हेन देयर वाज अ बिग रैली इन द यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर. इट ओपन विद अ गैप अप. उसके बाद स्पेंड ऑलमोस्ट द एंटायर वीक ट्राइंग टू कंसोलिडेट एंड पुल बैक much of that rally that occurred. So we have to see whether that kind of a pattern repeats or not. अगर करता है तो फिर हो सकता है next few days it can again spend in consolidation and pull back. क्योंकि जो macro economic data है, it is not looking very positive either from Eurozone or from UK. और कल जो US का retail sales था, that was quite strong, but producer price inflation was lower. तो एक तरफ जैसे inflation is coming down, which is quite expected, but the economy continues to hold up. Now, this risk-on sentiment, fall in the US yields, rise in the stock market, this will be seen as easing in the financial conditions, and हो सकता है the Fed members may like to push against it, because if the financial conditions ease significantly, it can start to have inflationary impact later down the road, and that's something the Fed doesn't want. So ho sakta hai if the stock markets continue to rally in US, we could see the rhetoric from the Fed members again change towards hawkish. So that's something we have to watch out for. But as of now, जो मैंने ये कहा कि 438 440 is a major support on the US 10-year. तो हो सकता है that could be the defining level for a lot of other markets, जैसे dollar index हो, USDINR, etc. So we need to keep a watch on that. So that's it, folks. This is Anindya Banerjee signing off. Have a fantastic day ahead.